What we need to grow. Miftah Ismail. Dawn Editorial. Published on December 8, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. In recent columns, I have written about the control of elites over Pakistan's polity, the ineffectiveness of our governments, and our pursuing the wrong model of import substitution, which results in boom and bust cycles. Since our elite already control most of our resources, they aren't interested in economic growth or increasing the size of the pie. Their preoccupation is with maintaining their lion's share of the pie. Our government's ineffectiveness serves our elite well as it stops any social mobility and preserves the status quo. Finally, the import substitution policy ensures that monopoly profits flow to the already well-off. The only way to escape this poverty trap is to come up with a new elite bargain that sues for growth and development. How can such a compact for prosperity be achieved is an important question that I leave aside for now. Today, I want to briefly describe what I consider to be 6 essential pillars for a development compact. If our government were to carry out just one task, I'd want it to be population control, my first pillar for development. No amount of resources we put in education or health will ever be enough unless we control our runaway population growth. Our population is growing at more than twice the rates of India and Bangladesh and 3 times the rate of Sri Lanka. Pakistan will forever be mired in poverty and illiteracy unless we bring down our population growth. The only way to escape the poverty trap is to come up with a new elite bargain. In the 1950s, an American economist, Charles Tiebout, came up with the concept of citizens voting with their feet and moving away from jurisdictions that do not provide services well or tax too much. He argued that because of this competition, cities and states would provide better services to citizens. In America, states are sometimes referred to as laboratories of democracy that experiment with different ideas until the successful ones are adopted widely. In America, power and responsibilities are not just devolved to its 50 states but to counties, loosely, what we call divisions. They typically provide many services, and cities, which are typically much smaller and have many devolved responsibilities. States and cities also must raise most of their own revenues. This way, the U.S. has implemented the most effective federalism, where spending and taxation decisions are made by the same jurisdiction. This federalism is partially responsible for America's incredible economic success. When Deng Xiaoping liberalized China's economy, he didn't just use the central bureaucracy in Beijing but also asked local government officials in 4 regions to establish special economic zones. One of the 4 zones, at Shenzhen, was very successful, and within 5 years, inspired by Shenzhen, there were 35 zones across China, which went on to become the engines of Chinese exports and growth. Even today, it is the best performing regional officials who are promoted to be the highest Chinese Communist Party and government officials. The Chinese economic miracle is in no small part due to the drive and zeal of the local officials who are competing against each other. Our 4 large provinces do not provide any competition, but if we had our nation's 38 divisions and more than 100 districts also competing with each other, we would definitely get better, more responsive governments. Even while keeping provincial boundaries intact, we just need to ensure that each division has an elected commissioner and each district has an elected mayor, and they are entrusted with significant devolved powers and responsibilities. Moreover, of the divisible pool money that is given to subnational governments, 60% should go to districts and 20% each to divisions and provinces, thus making districts the hub of metropolitan services. Empowered local governments with responsibilities for health, education, policing, zoning, etc., and raising revenues is my second pillar for growth. We should have many competing jurisdictions that make governments responsive and effective. My third pillar is to live within our means and reduce the fiscal deficit to less than our growth rate. The most efficient way to reduce the deficit is to restrict public sector development projects to major interprovincial projects, restrict the growth of current expenditures, including defense, to less than inflation,
and most importantly, reduce payments to subnational jurisdictions from the current 57.5 PC to about 40 PC of the divisible pool over 5 years. Of course, subnational jurisdictions should be allowed to raise their own revenues to make up for the loss of federal transfers. Financing of our fiscal deficits leads to crowding out of private investments and borrowing from foreigners. The former is obviously not desirable, and the latter results in current account deficits, which, as we are finding out, are not sustainable. We must therefore opt for fiscal and exchange rate policies that lead to a balanced current account. My fourth pillar is an adaptation of policies for export promotion as opposed to import substitution. Our exports are low because of 3 main reasons. 1. We don't provide continuous energy at reasonable rates. 2. Our country is not perceived as safe to visit by foreign buyers. And 3. Our companies prefer selling to a protected domestic market. The solutions for the first 2 reasons are obvious for at least 20 years but are still awaiting implementation. A solution for the third reason is to impose additional tax on companies that don't export even a small fraction of their sales and reduce custom duties that protect domestic manufacturers. These steps, plus export processing zones set up by competing divisions, will give a fillip to exports. My fifth pillar is improving agricultural productivity and yields. We call ourselves an agricultural country, and yet most years we import wheat, cotton, edible oil, lentils, chickpeas, garlic, ginger, and many other farm products totaling $8 billion. Our farm yields for most crops are considerably lower, not just compared to China but also India, which has similar conditions. Since our population is increasing by more than 5 million people annually, our shortage of food will only increase unless we enhance our farm yields. This will also raise farm income and alleviate rural poverty. My sixth pillar is education, which deserves a column on its own. The writer is a former finance minister. Published in Dawn, December 8, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. हालिया कॉलमों में मैंने पाकिस्तान की सियासत पर अशराफिया के कंट्रोल, हमारी हुकूमतों की गैर मुअस्सरीत और दरामदात के मुतबादिल के गलत मॉडल पर अमल पैरा होने के बारे में लिखा है, जिसके नतीजे में बूम और बस्ट साइकिल का नतीजा होता है। चूँकि हमारी अशराफिया पहले ही हमारे ज़्यादातर वसाइल को कंट्रोल करती है, लिहाजा वो माशी नमू पाई के साइज में इजाफे में दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी मसरूफियत पाई के अपने शेयर के हिस्से को बरकरार रखने के साथ है। हमारी हुकूमतों की बेअसरी हमारी अशराफिया को अच्छी तरह से फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि ये किसी भी मुआशरती नक़्लो हरकत को रोकती है और स्टेटस को बरकरार रखती है। आखिर में, दरामद मुतबादिल की पॉलिसी इस बात को यकीनी बनाती है कि इजारादारी मुनाफा पहले से ही अच्छी तरह से बहाओ। गुर्बत के इस जाल से बचने का वाहिद रास्ता यह है कि एक नया अशराफिया सौदा किया जाए जो तरक्की के लिए मुकदमा दायर करे। खुशहाली के लिए इस तरह के मुआहदे को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये एक अहम सवाल है जिसे मैं अभी के लिए एक तरफ छोड़ता हूँ। आज मैं मुख्तसर तौर पर बयान करना चाहता हूँ जो मैं तरक्याती कम्पैक्ट के लिए 6 ज़रूरी सतूनों पर गौर करता हूँ। अगर हमारी हुकूमत सिर्फ एक काम करती है तो मैं चाहूँगा कि यह आबादी पर काबू पाना हो, जो तरक्की के लिए मेरा पहला सतून हो। जब तक हम अपनी भागती हुई आबादी में इजाफे को कंट्रोल नहीं करते, तब तक हम तालीम और सेहत के शोबे में जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी काफ़ी नहीं होंगे। हमारी आबादी हिंदुस्तान और बांग्लादेश की शरह से दुगना और श्रीलंका की शरह से 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम अपनी आबादी में इजाफे को कम नहीं करते तो पाकिस्तान हमेशा गुर्बत और नाखानदगी का शिकार रहेगा। गुर्बत के जाल से बचने का वाहिद रास्ता यह है कि एक नया अशराफिया सौदा किया जाए। 1950 की दहाई में एक अमरीकी माहिर मुआशियात चार्ल्स टाबूट शहरियों के अपने पैरों से वोट देने का तसव्वुर लेकर आए और इन दायरा इख्तियार से दूर चले गए जो खिदमात अच्छी तरह से फराहम नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते हैं। उन्होंने दलील दी कि इस मुसाबकत की वजह से शहर और रियासतें शहरियों को बेहतर खिदमात फराहम करेंगी।
अमेरिका में बाज़ औक़ात रियासतों को जमहूरियत की तजर्बागाहें कहा जाता है, जो मुख्तलिफ नज़रियात के साथ तजुर्बात करती हैं जब तक कि कामयाब लोगों को वसी पैमाने पर अपनाया न जाए। अमेरिका में ताकत और जिम्मेदारियां सिर्फ इसकी 50 रियासतों को मुंतकिल नहीं की जाती हैं, बल्कि काउंटियों ढेले ढाले तौर पर, जिसे हम डिवीज़न कहते हैं, वो आमतौर पर बहुत सारी खिदमात फराहम करते हैं, और शहरों, जो आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और उनकी बहुत सी तफवीज़ शुदा जिम्मेदारियां होती हैं। रियासतों और शहरों को भी अपनी ज़्यादातर आमदनी में इजाफा करना होगा। इस तरह अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मुअस्सिर वफाकियत को नाफिज किया है, जहां अखराजात और टैक्स के फैसले एक ही दायरा इख्तियार की तरफ से बनाए जाते हैं। ये वफाकियत जुज़वी तौर पर अमेरिका की नाकाबिल यकीन माशी कामयाबी की जिम्मेदार है। जब डेंग शाओपिंग ने चीन की मईशत को आज़ाद किया तो उन्होंने न सिर्फ बीजिंग में मरकजी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, बल्कि 4 ख़तों में मकामी हुकूमत के ओहदेदारों से खुसूसी इक्तिसादी जोन कायम करने के लिए भी कहा। शी नज़ीम में 4 जोन्स में से एक बहुत कामयाब था और 5 साल के अंदर अंदर शी नज़ीम से मुतासिर है कर चीन भर में 35 जोन थे, जो चीनी बरामदात और तरक्की के इंजन बन गए। आज भी ये सबसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इलाकाई हुक्काम हैं, जिन्हें आला तरीन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारी ओहदेदारों के तौर पर तरक्की दी जाती है। चीन का माशी मौजज़ा मकामी हुक्काम की मुहिम और जोश व खुरूश की वजह से कोई छोटा हिस्सा नहीं है, जो एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। हमारे 4 बड़े सूबे कोई मुकाबला फराहम नहीं करते, लेकिन अगर हमारे मुल्क के 38 डिवीज़न और 100 से ज़ायद अज़ला भी एक दूसरे से मुकाबला करते तो हम यकीनी तौर पर बेहतर और ज़्यादा जिम्मेदार हुकूमतें हासिल करते। यहाँ तक कि सूबाई सरहदों को बरकरार रखते हुए हमें सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि हर डिवीज़न में एक मुंतखब कमिश्नर हो और हर ज़िला में एक मुंतखब मेयर हो, और उन्हें अहम इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की जाएं। मज़ीद बरा ज़ैली कौमी हुकूमतों को दी जाने वाली काबिल तकसीम पूल रकम में से 60% अज़ला को और 20% डिवीज़नों और सूबों को दी जानी चाहिए। इस तरह अज़ला मेट्रोपॉलिटन सर्विसेज का मरकज़ बन जाएंगे। सेहत, तालीम, पुलिसिंग, जोनिंग वगैरह की जिम्मेदारियों के साथ मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना और महसूलात में इजाफा तरक्की के लिए मेरा दूसरा सतून है। हमारे पास बहुत से मुसाबकती दायराकार होने चाहिए जो हुकूमतों को जिम्मेदार और मुअस्सर बनाते हैं। मेरा तीसरा सतून अपने वसाइल के अंदर रहना और माली खसारे को अपनी शरह नुमू से कम करना है। खसारे को कम करने का सबसे मुअस्सर तरीका यह है कि सरकारी शोबे के तरक्याती मंसूबों को बड़े बैन अल सूबाई मंसूबों तक महदूद किया जाए, दिफा समेत मौजूदा अखराजात की नुमू को इफरात ज़र से कम तक महदूद किया जाए, और सबसे अहम बात यह है कि ज़ैली कौमी दायरा इख्तियार में अदायगियों को मौजूदा 57.5% से कम करके 5 सालों में काबिल तकसीम पूल के तकरीबन 40% तक कम किया जाए। यकीनन ज़ैली कौमी दायराकार को वफाकी मुंतकिली के नुकसान को पूरा करने के लिए उनके अपने महसूलात में इजाफा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हमारे माली खसारे की माली एआनत निजी सरमायाकारी और गैर मुल्कियों से कर्ज लेने का बाइस बनती है। अव्वल अल-ज़िक्र वाज़े तौर पर मतलूबा नहीं है और मुअख्खर अल-ज़िक्र के नतीजे में करंट अकाउंट खसारे पैदा होते हैं, जो, जैसा कि हम तलाश कर रहे हैं, पायदार नहीं। लिहाजा हमें माली और शरह मुबादला की पॉलिसियों का इंतखाब करना चाहिए जो मुतवाज़िन करंट अकाउंट का बाइस बने। मेरा चौथा सतून दरामदी मुतबादिल के बरक्स बरामद के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों की मुवाफ़क़त है। हमारी बरामदात 3 अहम वजूहात की बिना पर कम हैं। 1. हम मुनासिब नरखों पर मुसलसल तवानाई फराहम नहीं करते हैं। 2. हमारे मुल्क को गैर मुल्की खरीदारों की तरफ से दौरा करने के लिए महफूज नहीं समझा जाता है। और 3. हमारी कंपनियां एक महफूज घरेलू मार्केट में फरोख्त करने को तरजीह देते हैं। पहली 2 वजूहात के हल कम अज कम 20 सालों के लिए वाज़े हैं, लेकिन अब भी अमल दरामद का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी वजह का हल यह है कि उन कंपनियों पर इजाफी टैक्स आयद किया जाए जो अपनी फरोख्त का एक छोटा सा हिस्सा भी बरामद नहीं करते हैं और घरेलू मैन्युफैक्चरर्स की हिफाजत करने वाले कस्टम ड्यूटी को कम करते हैं। इन इक़दामात के अलावा मुसाबकती डिवीज़नों के ज़रिया कायम करदा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बरामदात को फ़रोग़ देंगे। मेरा 5वां सतून ज़री पैदावार और पैदावार को बेहतर बनाना है। हम अपने आप को एक ज़री मुल्क कहते हैं
और उसके बावजूद ज़्यादातर सालों में हम गंदम, कपास, खुर्दनी तेल, दाल, चने, लहसुन, अदरक और बहुत सी दीगर ज़रूरी मसनूआत दरामद करते हैं जिनकी मजमूई मालियत $8 अरब है। ज़्यादातर फसलों के लिए हमारी ज़रूरी पैदावार न सिर्फ चीन बल्कि हिंदुस्तान के मुकाबले में भी काफ़ी कम है, जिसके हालात इसी तरह के हैं। चूँकि हमारी आबादी में सालाना 50 लाख से ज़्यादा अफराद का इजाफा हो रहा है, इसलिए हमारी खुराक की कमी सिर्फ इस वक्त तक बढ़ेगी जब तक हम अपनी ज़रूरी पैदावार में इजाफा नहीं करेंगे। इससे ज़रूरी आमदनी में भी इजाफा होगा और देही गुर्बत में कमी आएगी। मेरा छठा सुतून तालीम है, जो अपने तौर पर एक कालम का मुस्तहक है। मज़मून निगार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है। डॉन अखबार में शाये शुदा 8 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.